ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। They are not focused. Degree is not important. Important is your experiential learning. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। स्टूडेंट्स को क्यों फील होता है कि मेरे को तो वो बुली करते हैं। Respect yourself, believe in self. We need to train you how to actually neutralize a bully so that we can actually push them towards their profession. कम्युनिकेशन कैसे अच्छे कर सकते हैं सर? क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ए कम्युनिटी। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। अरे वाह, ग्रेट। Next panel for the day, which is on education, profession and passion. For the same, I have the first panelist, Professor Dr. Gurpreet Singh Tuteja. He is a professor of mathematics at Zakir Hussain Delhi College. Dr. Gurpreet, the Joint Dean Students Welfare, University of Delhi, carries with him an experience of close to 3 decades. A former Pro Vice Chancellor of SGT University, Gurgaon, Dr. Tuteja is skilled in e-learning, curriculum development, team building and public speaking. Besides student affairs, he's been in admission counseling and placement cells for the universities. A Microsoft certified professional he's known for his deft handling and helpful nature. We welcome you, sir. With this, I'd like to call the next panelist, Mr. Suresh Mansharamni. He was born in a refugee camp in Maharashtra. He started his career with a job of rupees 300 per month. Years later, he got his company listed in Bombay Stock Exchange, and his IPO in 1995 was times oversubscribed 300 times. This was followed by a presidential award. He's a certified Gallup Strengths coach, business coach, OKR expert, and author of 5 books. For someone who struggled with his English speech and writing, becoming a self-made millionaire by the age of 38 was a real turnaround. Can we just greet him with a round of applause? I would like to call upon our moderator for this panel, Dr. Gagandeep Kaur Gulati, a professor by profession but an author by passion. Dr. Gagandeep is many-facet personality. Teaching apart, she's a corporate trainer, a motivational speaker, and an entrepreneur. With a bag full of degrees to her credit, she's a source of inspiration to innumerable youngsters. Most of her qualifications in commerce and management are from Punjab University, Chandigarh. The human resources specialist has also compiled a coffee table book on prominent Sikh educationists from across the globe. Please put your hands together. Our last panelist for this panel, Gurinder Pal Singh, a former General Secretary and Treasurer of SGGSCC. Sardar Gurinder Pal Singh ji is the chairman of the Guru Nanak Public School, Punjabi Bagh. He's a highly respectable member of the community into social service. We also have Professor Avinash Singh, a print media journalist, a photographer, TV media person. He was a journalist with Hindustan Times for close to 20 years, having done many sensitive assignments across India and abroad, some of them being Operation Blue Star, Operation Black Thunder, and IPKF offensive in Sri Lanka. He also did special assignments for Reuters, BBC Time magazine, and Voice of America. Switching over to his academics in 1997, he's been with various government and private universities, professional institutions,
as Professor, Dean, Director, General Pro Vice Chancellor, and COO. He has been where the action is. It's a big honor for me to sit with all such very extremely senior personalities. I hope, Alindarji, I'm able to do justice to what you are expecting from me. Thank you so much for this opportunity. So now we will be talking about education because almost everyone sitting here are from education field. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜਾ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਰਟਸ ਕਾਮਰਸ ਸਾਇੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਡੂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੇ ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਟੂ ਤੇਜਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ Hello. Thank you so much and Sat Sri Akal to all. Basically, see, when a student comes to you, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं because I was in admission for 12 years in Delhi University. So people come to me and they say, sir, मैंने IIT के एग्ज़ाम दिया है, मैंने CAT दिया है, मैंने JAM दिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम के नाम लेते हैं और IIT JEE दिया है किस लिए दिया बेटा सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ कौन सा इंजीनियर बनना चाहता हूँ अगर अगला सवाल तो उसका जवाब होता है डिपेंड करता है सर मेरिट में मैं कहाँ स्टैंड करूँगा बेटा कुछ टारगेट नहीं सर मैं सिविल भी कर लूँगा मतलब वो यहाँ तक पहुँच गया कि मैं सिविल भी कर लूँगा अगर सर देखिए मैं टारगेट तो CS का कर रहा हूँ बट आई नो मेरी पोटेंशियल नहीं है पर ठीक है मैं मैकेनिकल ले लूँगा या फिर कुछ और देखूँगा डेटा साइंस कोशिश करूँगा दे आर नॉट फोकस्ड कि एग्जैक्टली क्या करना है हमारे यहाँ भी CUET एग्ज़ाम हो गया आप पूछो कहता सर अच्छे नंबर आएंगे तो मैं फिजिक्स ऑनर्स ले लूँगा नहीं तो आई विल ट्राई विद BA प्रोग्राम ऑल्सो एज इफ BA प्रोग्राम सब लोग कर सकते हैं और BSc ऑनर्स फिजिक्स बहुत सेलेक्टेड लोग कर सकते हैं पीपल फॉरगेट दैट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू एजुकेशन इज ए व्हीकल फॉर योर पैशन एंड प्रोफेशन सो इफ यू वांट टू पिक अप ए passion if you have a passion then obviously education will help you to pick up a profession it is something like मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ बहुत जल्दी समझ में आएगा हमारे ज़माने में कहा जाता था अरे यार उसने MCA की हुई है गजब है उसको कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा आता है या फिर उन्होंने MSc मैथमेटिक्स की है या PhD मैथमेटिक्स की है या एनी सब्जेक्ट PhD इन इकोनॉमिक्स है लंदन स्कूल से पढ़ा है उसके पास एक बहुत अच्छी डिग्री है उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच वी हैड नाउ द करेंसी हैज चेंज्ड डिग्री इज नॉट द करेंसी इफ यू आर बीइंग एडुकेटेड इन एन इंस्टीट्यूट और इन ए कॉलेज और wherever the degree is not important is your experiential learning whatever you learn in the college क्या लर्न करना आप कितनी रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने सब्जेक्ट पे कितना डिस्कशन कर रहे हो आप अपने सब्जेक्ट पे आप जो आपके जो पैशन था क्या वो उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है तब आप प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ोगे फॉर एग्जांपल आज ही हम लोग ये देख रहे थे बच्चों ने इतना अच्छा गतका खेला गतका वाज सो नाइस दैट आई रिक्वेस्टेड मैडम टू इंट्रोड्यूस दिस एज ए सब्जेक्ट इन द कॉलेज दिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए मार्शल आर्ट and we can put it in the mark sheet also that she is well versed with gatka so आपने यहाँ पर एक एज ए उसको आपने एक हॉबी लिया आपने उसको आगे जाके प्रोफेशन बना सकते हो आप प्रोफेशन भी नहीं बनाओगे एटलीस्ट यू आर सो मच एम्पावर्ड दैट यू कैन यूज यही अगर आप एक सब्जेक्ट हम आपको दे दें मैथमेटिक्स और जो आपको आता ही नहीं है या आप उसमें बहुत परेशान हुए और किसी तरह से आपने पास हो गए इधर उधर करके उसका लाइफ में फ़ायदा क्या होगा सो योर प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन योर पैशन
एंड द पैशन यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग नाउ. अभी से ही सोचना शुरू करो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो मुझे मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी. बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो फैशन स्टडीज़ कर रहे होंगे, बट दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन फैशन स्टडीज़, देन देयर इज़ नो पॉइंट. But if you start doing some work, start doing some internship, if some of you may be very good in Excel, they must be doing Microsoft Excel, या कोई भी कंप्यूटर की चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसको एज ए पैशन लीजिए. बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपसे फ्रीलांसिंग में प्रोग्राम कहती हैं कि आप हमें करके दे दो, ये काम हम पैसे देंगे. आप वो पिकअप करिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. देन यू विल फाइंड दैट योर ट्विस्ट और योर जंप from your passion to profession becomes very smooth. And that's what typically I did, and I say to my son and daughter both that you should pick up a passion. And my son had a passion at the age of 7. He started developing Android apps. Believe me, he's one of the best app developer. At the age, his age is hardly 19 or 20. He's being paid by best companies of US. So that was a passion. He started his passion and he took it to the different countries. So you should also begin like this, that you pick up a passion. आप, मैं ये जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि आप खाली पैशन कंप्यूटर्स में लीजिए. आपको लिटरेचर में पैशन है, आपको अगर कोई भी लिटरेचर हो सकता है, वो हमारे पंजाबी में भी हो सकता है, आप इंग्लिश में ले सकते हैं, बट यू शुड be well versed in Latin American studies में पढ़िए. Perfect, sir. So that means that there is no age कि ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ we should know, ਅਸੀਂ realize ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, and our parents can, our teachers can help us in knowing ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ. So therefore apart from ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, there is no dearth to knowledge and information. ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ CV ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਯੂ ਐਨੀ ਜੋਬਸ. CV ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ. ਸਰ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਡੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ. ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ interestingly we keep on pressurizing him, yes you have to do this much of studies, and we do ask him to take all the subjects. Social studies भी लेनी है, science भी लेनी है, मतलब till 9th we have to study all the subjects. So it becomes very difficult at times कि ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, then also he can opt for all those things. This is what I think to best of my knowledge ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ. ਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਆਲ ਥੀਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਾਓ.
we जी। are following those lines. ਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਲੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਟੂडेंट्स ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ को तो वो बुली करते हैं, बुली करना मतलब ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ मतलब ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर टुटेजा ने आपको बोला है ना, वो पता क्या था? 2 and 2 makes 5. Today, if you want to be successful, I'll come to your point. Today, if you want to be successful, so you need to be selfish. मैंने आपको फिश दे दी, अगर 24 घंटे में उस फिश को नहीं बेचोगे तो फिश क्या करेगी? स्मेल मार जाएगी। Your selfishness is you should be able to present yourself. Dr. Harpreet ma'am in the morning said, respect yourself, believe in self. If we believe, I'm really disturbed. Reason, I was in Kota where 3 students committed suicide because they could not clear IIT G in 2 attempts. दूसरा दुख, क्योंकि उनको कोई प्लान भी नहीं दिया। आप सबके लिए है पैशन और प्रोफेशन। Your passion should be your plan B. I'll come to that point a little later. As she said, कि आपको स्कूल्स में, हम पेरेंट्स, टीचर तो हाथ नहीं लगा सकता। वी हैव बिन प्रोड्यूसिंग बुलीज इन स्कूल्स। वो जो गुंडागर्दी जो हो रही है, वो जो बच्चे निकल रहे हैं जिनको हम मॉनिटर कहते थे या वो झापड़ भी मारते थे, टुडे वी ऑल नीड टू पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर वन थिंग, कि जो बुलीज हैं उनको हम काउंसलिंग के थ्रू स्कूल में कैसे सेट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली पुश देम टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर थिंग इज you need to be a con. You need to be a con to be a winner today. कैसे? फेयर एंड लवली. फेयर एंड लवली के पैसे किसको मिले? शाहरुख खान या वो दूसरी यामी गौतम. बाकी किसके पास है? तो छोटी सी बात है, मेक श्योर दैट यू आर meticulous in your planning, you are calculative, you are also doing your proper future planning. उसके बिना कुछ नहीं है. When we say bullies have been there. We need to train you how to actually neutralize a bully. जो आपकी क्लास में भी है, जो डोमिनेटिंग है, उन बुलीज को आपने न्यूट्रलाइज कैसे करना है, खुंडा किस तरह करना है, क्योंकि वो तो बहुत तंग करते हैं. You should not be. And please, your lives are important. Anybody who is into depression, please, there are people who would help you out. Dr. Saab is a counselor. Suresh ji is a counselor. वो सेकंड नेम मैं अगर गलत प्रोनाउंस करूंगा तो बाहर जाके मार पड़ेगी, मार नहीं खानी. She is a counselor and I also deal in counseling. Counseling is very important, whether you are looking for profession, whether you are getting married, whether you are getting old, all ages. And when we wait for the play, उसमें भी there is a counselor today. भूख भी लगी है तो भूख वाला काम भी हो रहा है. बट फैक्ट इज वी नीड टू स्टार्ट प्लानिंग. और जो बाहर जा रहे हैं ना, वो आपको बोल गई है रेशमा कि बाहर इतना सस्ता नहीं है या लाइफ इतनी आसान नहीं है. माय रिक्वेस्ट इज प्लान योर फ्यूचर. एज डॉक्टर टुटेजा सेड,
passion and profession. I was a sports reporter who was caught outside the Golden Temple at my in-laws' place, but I took pictures. एक picture उस समय 500. It was a tragedy. लेकिन journalist के लिए क्या हुआ? Because I was a reporter, but sports reporter. I had cameras. I could click picture of what was happening inside. The dead body of Jarnail Singh Bhindranwale was sold for $500 at that time. लोगों ने बाद में यही सोचा कि ये फोटोग्राफर है. मैं कहता हूँ journalism was that time a profession and photography was a passion. Today it is teaching plus counseling is a passion. Make sure you can connect the two things. Thank you. Very correctly said, sir. I remember when we were students here, all of the very dignitaries sitting here, when they were children, our parents used to be our counselors because koi bhi gal hundi hai. We didn't have counseling as a profession that time. But now, students actually, the children actually, they fear or they're afraid of, they're scared of talking to their parents ki o ki sochange kar siblings ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ professional counselors ਹੈਗੇ ਆ, one ਜਾਂ career counselors, we all are there in case, as sir said, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ it's very important, your lives are very important. If someone is saying something to you, be strong enough to face that and be strong enough to communicate that to a counselor. Here, Suresh sir, I would come to you because you are a speaker, you are an expert speaker. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ communication ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ problems ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. So how can we do that? Communication कैसे अच्छे कर सकते हैं, sir? I would like to ask you that question. Thank you, Dr. Gagandeep, and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ એનર્ਜੀ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਬੀਇੰਗ ਲਾਊਡ. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਲਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਬਲਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ telling me that I should not talk to him in Punjabi. ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 1971 ਰਜੌਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿ आप कहाँ से आए हो, तो मैं बोलता था हम लखनऊ से आए. हम कौन? तो हम तो अपनी बोलते थे. तो मुझे पंजाबी का एक वर्ड समझ में नहीं आता था, पर मैं देवनगर खालसा कॉलेज में पढ़ा और मैंने पंजाबी थिएटर में काम किया. कुछ सालों में मैं बगैर किसी से सीखे आई वाज फ्लुएंट इन पंजाबी. तो आपका सवाल है कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है. ये एक ऐसी स्किल है, पंजाबी में बोल लूँ मैं, इस तरह की स्किल है जिस हर किसी को सीखना चाहिए. एवरीवन शुड लर्न. क्योंकि जिंदगी में योर लाइफ, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, बहुत बढ़िया कोट हैगा टोनी रॉबिन्स का, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन. तो लाइफ में जहां भी आप जाएंगे, स्टेज हो या 1-to-1 हो या 1-to-many हो, कोई जॉब इंटरव्यू है, पढ़ाई है, किसी बुली को आप सामना कर रहे हैं. बहुत प्रैक्टिस की मैंने, 30-40 साल में प्रैक्टिस की थी कि सामने कोई बड़े गुस्से में आए तो मैंने दिखाया कि मैं गुस्सा कर सकता कि नहीं. बट आई नेवर गिव दिस पावर टू एनीवन एल्स. मैं हमेशा मुस्कुरा के जवाब देता हूं और वहीं उनका गुस्सा खत्म हो जाता है. दैट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स. तो जब आप कम्युनिकेशन स्किल को सीखेंगे, आप देखेंगे कि जहां भी, जिस भी पड़ाव पे आप जिंदगी में जाते हैं, आपको कामयाबी हासिल होगी. क्योंकि आपके पास वो स्किल है, जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, और जब आप बोलेंगे लोग उसको समझेंगे, और जैसे वो लैंड करेगा आपकी कुछ बातें लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है. मैंने ये देखा है. बहुत से लोग मेरे पास हैं जो इतना घाटा करके बिजनेस में आते हैं कि सुसाइड के कगार पे खड़े हैं, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन से मोटिवेट होके जाते हैं, कहते सर हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं. आज हमारे अंदर वो आत्मविश्वास है, वो जोश है. तो दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. और हम सब जानते हैं कि हमारे लीडर्स जितने भी हैं, वो जितना करते हैं उसका मायने नहीं रखता, जो कहते हैं उसी के बल पे इलेक्शन जीता जाता है. थैंक यू. ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸੈਡ ਸਰ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲੈ ਸੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ.
आई ਬਿਲੀਵ ਮੂਵੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬਟ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰੁਤਬਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਲਈਏ ਐਂਡ whenever we have any problem with someone it can be a parent, a brother, sister, spouse, anyone, friend, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੈਸੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ the flaws that we have. So finally, we would come to the conclusion of this panel discussion and a last word, a last line from each one of us. Sir, we start from today, we start from you. One line for all the youth present here, any inspirational thing that you would like to tell them. See, you are studying in best university and you know you are one of the best in one of the best colleges, and here you will find that there are different kinds of courses available. Apart from your skill enhancement courses, you have courses like add-on courses. They have a list of add-on courses. If they are not available in this college, you can approach to other colleges. आप कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है DU के कॉलेज से करो, कहीं से भी करो, लेकिन एक पैशन डेवलप करो. एक अपने आप में एक ऐसा होता है, एक पौधा छोटा सा होता है ना, उस पौधे को अगर आप खाली पानी देते रहोगे तो क्या होगा, एक लेवल तक जाके उसकी रुक जाएगी हाइट बढ़नी, और वो फिर ना तो हाइट बढ़ेगी ना वेट बढ़ेगी, कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा. उसी तरह से आपको भी एक फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत है, जिससे कि आप डेवलप करें. और जितना बड़ा पेड़ होगा, आप जितनी चीज़ें सीखेंगे, आप ग्रो करेंगे, पेड़ बड़ा होगा, और एक टाइम आएगा जब चिड़ियाँ और अदर जो पक्षी हैं वो आके उस पे बसेरा बनाएंगे. तो आपको उस तरह का वृक्ष बनना है जो दूसरों को अपनी छाया दे. तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपना पैशन डेवलप करना होगा, और पैशन के बाद ऑटोमेटिकली प्रोफेशन विल कम, पीपल विल कम टू यू कि यार थोड़ा सा हमें ये समझा दो, ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे कर सकते हैं. वट एवर इज द स्ट्रीम, आई डोंट माइंड इन दैट, आई नो यू कैन एक्सेल. I'm sorry that this program was supposed to be a discussion and it has converted into a counseling session. Thank you so much. Thank you, sir. Suresh sir, one line from you. क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा. अरे वाह, great. आपके साथ जो आपके स्टूडेंट हैं, ये आपका नेटवर्क है, ये आपके दोस्त हैं, जिंदगी में बहुत काम आएंगे. उनके कांटेक्ट हमेशा पास रखिएगा. मैंने पढ़ा था बिल क्लिंटन जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो हर स्टूडेंट का नाम, उनकी हॉबीज, उनका पता नोट करते थे डायरी में. उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कह रहे मुझे गवर्नर के लिए खड़ा होना आर्किंसन में, उसके लिए मैं आज नेटवर्क बना रहा हूँ. मैंने जब पहली बार अमेरिका गया 1986 में, मेरे पास पैसे नहीं थे, टिकट किसी ने उधार दी, $300 दिए, और स्कूल के एक दोस्त ने मुझे अपने घर में रहने की जगह, वो मेरा नेटवर्क था. तो मेरा लास्ट मैसेज है, इस नेटवर्क को वैल्यू करेगा, आपके बहुत काम आने वाला है. तो बच्चों किसी अपने फ्रेंड्स से लड़ाई ना करियो, पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ. ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸੈਡ ਸਰ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ ਵੂਮੈਨਸ ਕਾਲਜ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਈ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ. Yes, sir. So the girls, you should be proud of yourself and you should make your alma mater, your college, your teachers and your parents proud of you. So
कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। सिर्फ 2 एग्जाम्पल, ड्रीम बिग, प्लान जुडिशियसली। सामने 3 एग्जाम्पल बैठी हैं। बलिंदर सिंह जिस समय पहली बार आए, वी वर टोल्ड, उनको न्यूज के बारे में नहीं पता था, आज दुनिया को न्यूज दे रहे हैं। पहले ट्रेनिंग ये हुई कि टीवी कैमरा के सामने बैठे, 3 days later he was training 15 others. He has planned, he has been face of many television channels, और उसके साथ साथ he was planning his future. वो प्लान कर सकते हैं अगर वो 300 रुपए से शुरू होके 300 times ओवर सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप अपना IPO, तो भाई आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, सिर्फ जब आपके काम की बात हो रही है उस समय फोन छोड़ दो और बातें छोड़ दो। आपके पास 2 लोग और बताऊंगा, एक अर्चना जिसने स्लम से शुरू किया, आज प्रिंसिपल हैं और NGO चला रही हैं, एक जिनकी मैं वेट कर रहा हूं, मैं आत्मजीत कहता हूं उनको, लेकिन AJ सिंह, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, he can actually practically give you answer to anything you want. प्लान तो करना शुरू कर दो। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ही चीज कहती है, फिजिक्स और इंग्लिश लिटरेचर इकट्ठा कर सकते हो, तो प्लीज स्टार्ट प्लानिंग। अगेन, पैशन एंड प्रोफेशन, once you do, you would be a wonderful combination of the two. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੁਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸ਼ਨ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰ ਸੈਡ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ B। ਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਧਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪਾर्टी ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मेक एटलीस्ट 5 न्यू फ्रेंड्स। नहीं तो अपने दोस्तों के साथ गए, अपनी फैमिली के साथ गए, वापस आ गए। नेटवर्किंग इज right person at the right time. When you introduce yourself, you have 20 seconds of an advertisement. What do? I train the trainer. Say something कि सुरेश जी वापस आके ना एक क्वेश्चन पूछे, what? It's an opportunity for you कि when you introduce yourself in 10 to 15 seconds, say something, that person comes back to you. That is beginning of your networking. Thank you. Thank you so much. So finally, we come to the conclusion of this panel discussion. Again, a big thank you to Dr. Harpreet Kaur ma'am. Thank you so much for having us here. Thank you so much, V Media and Sardar Palinder Singh ji, for having us all here. Again, a great honor for me sitting with you all. Kite mere to galti ho gayi hoye, I apologize for that. Thank you so much. Sat Shri Akal ji. Really, it was a great session. Please, मेरे ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ऑनर कर सकिए। एक मैं चाहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा भलिंदर जी के लिए और वी मीडिया के लिए जोरदार तालियां फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट। हम सब लोगों को एक जगह एक साथ इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को खड़ा किया और आप लोगों को लेके आए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट।